हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली विल हैव इट्स ओन सोलर प्लांट, सोलर फ्लोटिंग फार्म, राइट? एंड दैट टू ऑन बवाना लेक नियर फरीदाबाद. So where it all started, where the solar power started? The solar power has its origin from Paris Accord in 2015, International Solar Alliance, right? और वहां से ये expand ही होता चला जा रहा है. Now we have come to the rooftop solar program, और ये सब आता है अंडर द नेशनल सोलार मिशन, विच कम्स अंडर नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज 2008. तो ये सारे चीजें हैं जो आपको यू शुड बी कीपिंग इन योर माइंड. देन कम्स द फैक्ट्स रिलेटेड टू द दिल्ली का सोलर फ्लोटिंग फार्म्स. द प्रोजेक्ट हैज बीन स्टार्टेड इन फर्स्ट टाइम इन तेलंगाना एंड विशाखापट्टनम. हमें देखने को मिलते हैं फ्लोटिंग फार्म्स, एंड देन दिस कम्स टू Delhi. So this project will be the first in case of Delhi. The project on a pilot basis at outer Delhi's Bhavana Lake. Proposal to install floating solar panels on water bodies such as the Yamuna at Wazirabad and several ponds and lakes wherever possible. Why are we planting these solar power farms in the lakes, in the water bodies? Why? Because we have limited land surface, and there are n number of benefits of these farms, installing these farms on water bodies. So let me tell you something about solar mission as well. India is targeting to achieve 500 gigawatt of alternative energy till 2030, and Prime Minister Modi is very much obsessed about this, because we are not energy sufficient country, and even if we will not be in a sustainable situation for next 10 to 20 years अगर हम लगातार कोयले का, कोल का या फिर गैसेस का यूज करते रहे इस तरह से. तो इसलिए हम अपनी ऑल्टरनेटिव एनर्जी फ्यूल्स को इनहैंस करते चले जा रहे हैं, एंड द मेजर पोर्शन आउट ऑफ दैट 500 गीगावाट विल बी फ्रॉम द सोलर पावर. सो इट विल बी अराउंड 280 गीगावाट फ्रॉम द सोलर पावर. Currently we have successfully achieved 175 gigawatt ka target, and it is one of the commitment of India for Paris Accord as well. So the proposal to install floating solar power panels on water bodies such as on the Yamuna and at Wazirabad. These panels can be installed on natural water bodies and man-made lakes. The benefits of such solar panels are limited land is required, because we have limited land. तो हमें किसी ना किसी तरीके से उसके ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने ही होंगे. अब लैंड का ऑल्टरनेटिव था रूफटॉप, बट रूफटॉप इज ऑल्सो लैंड, तो हमें उसको वाटर बॉडीज में प्लांट करना पड़ा. देन कम्स द रिड्यूस्ड वाटर इवेपोरेशन रेट. आप खुद ही सोचिए, वाटर के सरफेस पे देयर विल बी सोलर पावर पैनल्स, तो वो कैसे इवेपोरेट हो पाएगा? सो इट विल ऑल्सो रिड्यूस द इवेपोरेशन रेट. देन कम्स द थर्ड पॉइंट, इवेपोरेशन is reduced and then efficient in reducing CO2 emission. जब हमारे पास ऐसी alternative energy fuels abundance में होंगे, तो obviously this will reduce carbon dioxide emission. And remember the first target of Paris INDC. What is that? The first commitment is 33 to 35% per unit of GDP हम अपना emission कम करेंगे. मैं आपको basics इसलिए बताता जाता हूं because this will benefit you as current affairs, but उसके साथ अगर basics को add कर देंगे तो we'll kill it. Then the next one, the water body underneath the solar modules help in maintaining their ambient temperature, thereby improving their efficiency and generation. अगर हम rooftop में या land surface में करते हैं तो उनका temperature की वजह से heat जो होती है वो उनसे बाहर भी निकल जाती है, बट वाटर बॉडी में जब वो होते हैं तो पैनल्स को कूल करते रहते हैं, इस वजह से एफिशिएंसी बढ़ जाती है. देन नेक्स्ट इज चीपर एंड मोर एफिशिएंट देन रूफटॉप, बट दिस पॉइंट इज नॉट करेक्ट, बिकॉज इस प्लान लॉन्ग रन में दिस विल बी चीपर. दिस पॉइंट इज फॉर दैट ओनली कि लॉन्ग रन में दिस विल बी चीपर, बट इनिशियल इंस्टॉलेशन में दिस इज मच हायर इन रेट. देन कम्स द सेविंग मोर वाटर फॉर हाइड्रो पावर जनरेशन, बिकॉज अगर इवेपोरेशन नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है हाइड्रो पावर के लिए देयर विल बी मोर वाटर. सो वी आर कमिंग, दिस इज अ गुड न्यूज फॉर यू, वी आर कमिंग विद अ न्यू कोर्स, वेरी lucrative fees, which is 21,499 rupees plus GST, which was earlier around 60,000, and
The most important thing is you can pay this much fees in 11 EMIs, which will cost you around 2000 rupees only. So the whole GS foundation and advanced will be covered here, right? Let's get back to the challenges part. The challenges are, they are expensive, really expensive to install. More money is required to install floating solar panels than a traditional photovoltaic system. Requires a specialized knowledge and equipment. However, as the technology advances, the installation cost will decline. And with the declination of installation cost, this will be more sustainable in nature. Keep that in mind. Limited application. Many floating solar installations are large scale and they provide electricity to large communities. And another challenges are understanding of water bed topography. हम हर जगह पर इनका installation नहीं कर सकते हैं. Developing floating solar projects requires a thorough understanding of water bed topography. Then there is a case study of Jordan. Jordan में क्या किया भाई, वाटर की स्कार्सिटी झेल रहे थे और अचानक से क्या हुआ, सोलर पैनल्स बिछा दिए पूरे के पूरे वाटर के सरफेस में और क्या हुआ, स्कार्सिटी कम होने लगी, 40% तक कम होने लगा इवेपोरेशन. और इसकी वजह से वाटर रिटेन्ड, एंड वाटर रिटेन्ड बिकॉज ऑफ दैट क्या हुआ, स्कार्सिटी कम हुई. एंड इट प्रोड्यूस 425 मेगाहर्ट्ज of electricity annually, which is splendid. So this is it for today. Thank you so much for joining the session.